हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइस। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा बीकॉम ऑनर्स 6 सेमेस्टर का इनडायरेक्ट टैक्स लॉ के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यूनिट 4 के। यूनिट 1 यूनिट 2 ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। सारे क्वेश्चंस मैंने आपके साथ फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर किया हुआ है, डेफिनेटली इनको चेकआउट कर सकते हो आप। ठीक है, आज के वीडियो में हम बात करेंगे वो मेंशन द वेरियस क्वेश्चन देख सकते हो, 10 मार्क का क्वेश्चन है 1A का। मेंशन द वेरियस प्रोसीजर फॉर GST असेसमेंट। लास्ट ईयर आ चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डेफिनेटली इसको गौर से देखिए। और हाँ, बता दूँ मैं आपको, अगर आपको इनके सारे PDF चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, नंबर डिस्क्रिप्शन में है। मैं सारे के सारे PDFs आपको वेरी रीजनेबल प्राइस में शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए आंसर को लिखिए। यहाँ पे सबसे पहले आंसर को लिखना है, प्रोसीजर फॉर GST असेसमेंट इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप्स। बहुत सारे स्टेप्स हैं, 4 स्टेप्स हैं, इनको अच्छी तरीके से देखिए। स्टेप 1 सबसे पहले देखिए, द टैक्सेबल पर्सन हैज़ टू गिव द कंसर्न GST ऑफिसर ए रिक्वेस्ट फॉर प्रोविजनल असेसमेंट इन राइटिंग। स्टेप 1। उसके बाद देखिए स्टेप 2 देखिए, द GST ऑफिसर ऑन रिव्यूइंग द एप्लीकेशन विल पास एन ऑर्डर विद इन ए पीरियड नॉट लेटर देन 90 days फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ द रिक्वेस्ट, अलाउइंग पेमेंट ऑफ टैक्स ऑन ए प्रोविजनल बेसिस और एट द GST rate or on which such value has specified by him. Step 3 देखिए, the taxable person, who is making payment on a provisional basis, has to issue a bond with security promising to pay the difference between a provisionally assessed tax and final assessed tax. Step 4 देखिए, the GST officer will pass a final assessment, with a period not exceeding 6 months from the date of commencement of the order of provisional payments. तो ये रहे 4 स्टेप्स जहाँ पे आपका GST असेसमेंट का जो प्रोसीजर है वो यहाँ पे क्लियर तरीके से फॉलो हो रहा है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। डिस्कस ब्रीफली द वेरियस टाइप्स ऑफ असेसमेंट अंडर GST। वेरियस टाइप्स ऑफ असेसमेंट बहुत सारे हैं। सबसे पहले आंसर को लिखिए, द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ असेसमेंट आर प्रोवाइडेड अंडर GST लॉज। नंबर 1 इज सेल्फ असेसमेंट, सेक्शन 59। एज द नेम सजेस्ट, सेल्फ असेसमेंट इज अ प्रोसेस वेयर बाई ए पर्सन फर्स्ट असेसेस द टैक्स पेएबल बाई हिम, पेज द टैक्स एंड देन फाइल्स द रिटर्न फर्निशिंग द डिटेल्स ऑफ हाउ ही हैज़ अराइव्ड एट द टैक्स पेएबल बाई हिम। दूसरा देखिए, प्रोविजनल असेसमेंट, ये सेक्शन 60 के अंडर आता है। प्रोविजनल असेसमेंट प्रोवाइड्स ए मेथड फॉर डिटरमाइनिंग द टैक्स लाइबिलिटी इन केस द करेक्ट टैक्स लाइबिलिटी कैन नॉट बी डिटरमाइंड एट द टाइम ऑफ सप्लाई। तीसरा देखिए, स्क्रूटिनी ऑफ रिटर्न, ये सेक्शन 61 के अंडर आता है। द फॉलोइंग आर द प्रोविजंस, कौन से हैं। नंबर 1 देखिए, इसके अंडर में नंबर 1 है स्क्रूटिनी बाय प्रॉपर ऑफिसर। प्रॉपर ऑफिसर में स्क्रूटिनाइज द रिटर्न एंड रिलेटेड पार्टिकुलर्स फर्निश्ड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन टू वेरीफाई द करेक्टनेस ऑफ द रिटर्न एंड इन्फॉर्म हिम ऑफ द डिस्पेंसरीज नोटिफाइड इफ एनी इन्फॉर्म GST ASMT 10 एंड सीक हिज एक्सप्लेनेशन देयर टू विद इन स्पेसिफाइड टाइम नॉट एक्सीडिंग 30 days। दूसरा देखिए, कम्युनिकेशन टू रजिस्टर्ड पर्सन, इन केस द एक्सप्लेनेशन इज फाउंड एक्सेप्टेबल द रजिस्टर्ड person shall be informed accordingly, inform GST ASMT 12 and no further action shall be taken in this regard। चौथा देखिए, असेसमेंट ऑफ नॉन फाइलर्स ऑफ रिटर्न, सेक्शन 62 के अंदर आता है। द प्रॉपर ऑफिसर में प्रोसीड टू असेस द टैक्स लाइबिलिटी वेयर ए रजिस्टर्ड पर्सन, नंबर ए देखिए, फेल्स टू फर्निश द रिटर्न अंडर सेक्शन 39 मंथली और क्वार्टरली और सेक्शन अंडर सेक्शन 45 फाइनल रिटर्न, एंड नंबर बी देखिए, a notice under section 46 has been issued by proper officer to the defaulting taxable person requiring him to furnish the return within a period of 15 days and taxable person fails to file return within the given time। Number 5 देखिए, assessment of unregistered persons, सेक्शन 63 के अंडर आता है। बेस्ट जजमेंट असेसमेंट, नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग टू द कॉन्ट्रेरी कंटेन्ड इन सेक्शन 73 और सेक्शन 74 वेयर ए टैक्सेबल पर्सन हु वाज लायबल टू पे टैक्स, नंबर 1 फेल्स टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन इवन दो लायबल टू डू सो। नंबर 2 देखिए, हुज रजिस्ट्रेशन हैज़ बीन कैंसल्ड अंडर सेक्शन 29 सबसेक्शन 2 फॉर एनी रीजन मेंशन देयर इन। नंबर 6 देखिए, समरी असेसमेंट इन सर्टेन स्पेशल केसेस, सेक्शन 64 के अंडर ये आता है। और ये लास्ट है, इसके अंडर देखिए, द समरी असेसमेंट कैन बी इनिशिएटेड टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू with the various permissions of additional commissioner or joint commissioner when number 1 the proper officer has evidence that a taxable person has incurred a liability to pay tax under the act, and number 2 the proper officer has sufficient grounds to believe that delay in passing an assessment order may adversely affect the interest of revenue। तो ये रहा पूरा दोनों क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। आई होप को वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि वीडियोस आपको मिलते रहे। ठीक है, मिलते हैं अगला वीडियो में और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। और कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट कीजिए, मैं इसका रिप्लाई जरूर करूँगा।